Pinky, now let me tell you something very exciting. We saw many camels had beautiful artworks on their bodies. It had been created by cutting and shaping their body hair in fancy styles. Isha described. तो जैसे मैंने अपने बालों में हेयर स्टाइल करा रखा है, ऐसे ही कैमल्स का भी हेयर स्टाइल होता है और उनके ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं. पता है आपको कौन सा कैमल कितना सुंदर लग रहा है, उस पर कैसी डेकोरेशन हुई है, सब देखते हैं वहां पे. And I enjoyed this ice cream made from camel milk. Its flavor was somewhat different from that of other ice creams, but very delicious. Myra remembered. Enjoying these descriptions to the fullest, Pinky listened with full concentration. What else did you all do on this trip, Mummy? Tell me, she begged, tugging in her mother. The camels had been decorated so beautifully that all of them together looked like a wedding parade. Despite being animals, they were moving in a very disciplined and smooth procession. Her mother explained, Mommy, you forgot the camel race. Do you remember how quick these camels were? They ran so fast when it was the time for the camel race. Isha described the scene as if the race was happening in front of her eyes. All the foreign tourists looked astonished while watching this fascinating camel race. Most of them were capturing it on their cameras. Their mother added, What else happened on that trip? Is this all, or was there something else too? Pinky asked. Smiling, her mother said, No, there were plenty of things we enjoyed and lots of sights we saw. For example, take the locals there. Their traditional Rajasthani clothing was so bright and colorful that it was a treat to our eyes. There was also a competition related to their clothing and a tug of war competition between the tourists. So बच्चों, आपको पता है tug of war क्या होता है? क्या आपने कभी एक चीज को पकड़कर दो लोगों ने लड़ाई की है कि नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है? तो बच्चों, इसी को कहते हैं टग ऑफ वॉर. तो हम क्या करते हैं, हम एक रस्सी बनाते हैं. आप में से बहुत सारे लोगों ने तो खेल भी रखा होगा, है ना? एक रस्सी को दो साइड से जब 3-4 लोग मिलकर के खींचते हैं और जो खींच लेता है दूसरे साइड को वो जीत जाता है. तो यही कंपटीशन वहां पे भी हो रहा था. ठीक है. What about food, Mommy? You haven't told me anything about the food there. Pinky was almost lost in Bikaner streets. The cuisine is just mouth-watering. I still remember the delicious taste of the flatbread made of millet flour, along with crushed sweet meat and a cluster of spicy beans. And eating these delicacies while sitting on top of the sand dunes was an unforgettable experience. वाओ, सोच के ही मुझे तो इतना रॉयल फील हो रहा है. आप कभी गए हो? मैं गई हूँ. मैं पुष्कर गई हूँ, बीकानेर नहीं गई हूँ. तो वहाँ पे भी कैमल्स वगैरह होते हैं. मैंने वहीं पे राइड किया था. तो वहाँ भी मैंने भी ये जो मिलेट लिखा हुआ है ना, मिलेट फ्लावर, इसको हम बाजरे की रोटी भी बोलते हैं. तो मैंने बाजरे की रोटी, कट्टे का साग, दाल बाटी चूरमा सब ट्राई किया था. देखने में पतली लगती हूँ पर मैं खाती बहुत हूँ. आपको भी खाना चाहिए. तो चलिए आगे सुनते हैं. Hearing this from their mother, not just Pinky but also Esha and Myra began to salivate at the memory of such mouth-watering food. And Pinky, this will definitely shock you. Some people were dancing with their feet on hot burning coals. As I watched them dance like that, I almost screamed. I couldn't even imagine how they could dance on burning coals without being afraid that their feet would get burned. Esha said while recalling that incident from that trip. नहीं, ये बच्चों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं इसलिए ये करते हैं. तो ये एक स्टंट होता है जिसमें आप कोल के ऊपर चलते हो, पर आपको नहीं चलना है. ठीक है, मैं भी नहीं चलती हूँ. No matter what, but the next time we are going to Bikaner for sure, and I'll see for myself how exactly the camel dance. Esha and Myra nodded and giggled. Your stories have really got me excited and given me a virtual trip to Bikaner. I have enjoyed this virtual trip. Ha! Pinky laughed and her face brightened with excitement. तो क्या बच्चों, आपको भी उतना ही मजा आया जितना कि पिंकी को सुनकर के आया? Well, उसने तो बोल दिया कि मुझे वर्चुअल ट्रिप बहुत अच्छा लगा है.
आई होप कि मेरे साथ आपका भी वर्चुअल टूर अच्छा ही रहा होगा। अब ये स्टोरी सुनने के बाद और पढ़ने के बाद मेरा तो पूरा प्लान है कि मैं अपनी नेक्स्ट छुट्टियों में बीकानेर जाने वाली हूँ और बीकानेर के साथ राजस्थान की और भी सारी जगह कवर करूंगी। क्या आप भी जाने वाले हैं? बताइएगा मुझे कमेंट में लिख करके। तब तक के लिए सायोनारा, बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पप्पी झप्पी, बाय।